Hello everyone, welcome to Planner Guide 2023, and this is the 7th episode I guess, and this is the final episode. Oh my god. So I was so confused myself as to which planner to choose, even though I was giving you my first impressions, reviews and checking all the planners out there. Which, by the way, in case you are just stumble upon my channel, and in case if this is your first video, then please know that this is the part of planner reviewing series. I will link up the entire series in my description box, so check it out. Maybe it will help you and guide you to choose your perfect 2023 planner for yourself. Anyways, moving on to which planner I have chose for myself. Honestly, there are so many planners which are totally my types, which I love and which I'm vibing with. I'm sure you all are waiting to know which planner I'm about to choose. I would love if you can pause this video and comment down below your guesses and then see if you guessed it right. I am excited to see your guesses. But coming to the planner I finally decided for 2023 is the Art Loom Planner. So I was confused between two planners, that is the Art Loom Planner and the Factor Notes Planner. Honestly, I was so attracted by the happy hamper of Factor Notes Planner, and yes, I am in love with the Believe One Planner. The cover is love. That is exactly what I want to see a whole year, because it has universe aesthetic based cover and I am a strong believer of the universe. So I wanted that badly. But why then I chose the Art Loom's planner? This planner has such a vibrant and cool colors which are totally my type. I mean, I love pastels, and also the insert. All the sections are really well thought. Brilliant. Especially I love the goal setting process it has. So thoughtful, and all the exercises are also so fun. I haven't seen any planner have this sort of inserts. This is completely my style, very subtle and sober yet colorful. Now let's quickly get into the flip through of this planner. First of all, 10 on 10 for this cute packaging, and we got these freebies. Let's see. So I got this thank you card, then one highlighter, a bookmark, a pen and my favorite sticker book. It has so many cute stickers which I absolutely love. Also, we have one bag to keep this planner safely inside it. So yeah, I think all the freebies are really useful. Now let's see our planner. Yeah, I'm so excited. Ta-da! Here we have our planner and it says magic is everywhere, and I am in love with this cover. So let's open it. First of all, we have this cute printed paper then this planner belongs to. So this is the place to write my name. Then on the next page we have some rules and principles to follow, and on the other side we have goodbye 2022. So it's so important to reflect back on 2022, and then hello 2023. So you can write here what is your wish for 2023 or your goals, or you can write anything that you want in 2023. Then we have 2023 calendar, which I think comes so handy for people like us. I mean, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत काम आता है, क्योंकि हम तो हॉलीडेज ही ढूंढते हैं, राइट? Wow, then coming to my favorite page, that is vision board. So here you can put all your visions and goals of 2023, and on the next page there is a quote written here. It says, when you put your plans on paper you get one step closer in achieving them. So true. The only one thing that I feel कि यहाँ पे ना कोड की जगह पर विजन बोर्ड के लिए ही स्पेस दे देते तो वो बेटर रहता, because honestly I need more space for my vision board.
Anyways, then we have some fun elements also, like say it with stickers. So again, I know this is something interesting and fun, but I personally feel that इसकी ज़रूरत नहीं थी because I don't really use it, लेकिन बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं. So maybe I will DIY it. Have gratitude affirmations, and I think this is so helpful, and again one of my favorite page, that is gratitude page. And I really love this whole concept because they have given different areas to write, like grateful for an opportunity, grateful for a challenge, a life lessons learned, an accomplishment, a fear overcome, and a hidden blessing. Wow, really thoughtful. Then we have goal setting page, and this is mind blowing. जब मैं ये प्लानर रिव्यू कर रही थी एंड जब मैंने इनके ये गोल सेटिंग पेजेस देखे थे, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही प्लानर चाहिए बिकॉज दिस इज़ द एग्जैक्ट टेक्निक दैट आई फॉलो फॉर माई सेल्फ. सो इन शॉर्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने जो ईयरली गोल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 9 मंथ्स गोल्स में, और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है मंथली गोल्स, और मंथली गोल्स ब्रेक डाउन करके स्मॉल टास्क को डिवाइड करना है वीकली गोल्स में, एंड उसको आगे ब्रेक डाउन करना है डेली टू डू लिस्ट में. और अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो देन ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने गोल्स अचीव ना कर पाओ. ट्रस्ट मी, ट्राई इट वंस. ओके, नेक्स्ट अगेन यू कैन सेट योर गोल्स फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, और इसी को आप फिर अपने हैबिट ट्रैकर में ऐड कर सकते हो. जैसे कि अगर मेरा एक हेल्थ गोल है, डेली एक्सरसाइज, देन आई कैन पुट दिस थिंग इन माई हैबिट ट्रैकर. सो दिस वे आप अपने सारे गोल्स को भी अचीव कर सकते हो. Then we have recommendations page, again very useful section because you know what, 2022 में मेरी जो रीडिंग की हैबिट है वो कहीं गुम हो गई है. So I really want to build that habit again. Then we have yearly view sort of page. I am little bit disappointed here because I want more space. Also I need a dedicated page for yearly goals. So yeah, क्योंकि इतने स्पेस में क्या ही लिखेंगे. Okay, then finally we have our monthly pages, and artwork is bang on. All monthly pages have such a beautiful artwork, and again I feel that कि जो quotes के pages दिए हैं वो extra है. I mean इसकी जगह पर अगर notes के लिए pages दे देते तो वो ज़्यादा better रहता. Anyways, so on the monthly pages, first of all we have habit tracker and mood tracker. So mood tracker मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ habit tracker की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने सिर्फ 4 ही हैबिट्स के लिए स्पेस दिया है, क्योंकि हम ना कई बार बहुत सारी हैबिट्स एक साथ ऐड कर देते हैं और वहीं पे हम फेल हो जाते हैं. So that is not a right way. So I think this thing really works. And we have expense tracker, and I am so grateful for this thing क्योंकि दूसरे प्लानर्स में बजट ट्रैकर होते हैं लेकिन उसमें इतनी सफिशिएंट स्पेस नहीं होती कि हम सारे एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग अच्छे से ट्रैक कर सके. बट हियर दे हैव गिवन अ होल पेज. सो अ बिग बिग थम्स अप. अब मैं अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकूँगी. एंड वी आर ऑन द मंथली स्प्रेड, और मैं सबसे ज़्यादा इस पेज को यूज़ करती हूँ. एंड इनफ स्पेस है, प्लस दे हैव गिवन स्पेस टू राइट प्लेसेस टू विजिट एंड थिंग्स टू लर्न, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज फॉर मी एक्सप्लोरिंग इज़ समथिंग दैट आई विश टू डू इन 2023. Then we have weekly goals. So as I said earlier, you can plan everything here, and one more great thing is that they have given 2 separate to-do lists for personal and work. I mean this thing is so important क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने काम में अपने आप को और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते. तो अगर हमारे पास 2 to-do लिस्ट होगी तो हमें पता चलेगा कि ओके, आई नीड टू बैलेंस माई वर्क लाइफ एज वेल एज माई पर्सनल लाइफ. एंड ऑल्सो वी हैव 1 एक्स्ट्रा पेज टू राइट एनी नोट्स और एनीथिंग. और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेली पेजेस. सो बेसिकली यू कैन राइट योर डेली टू डू लिस्ट और एनीथिंग हियर. एंड यहाँ पर ना साइड में हमें वाटर ट्रैकर भी दिया है विच इज़ अगेन ग्रेट एडिशन.
and all the monthly pages have beautiful artwork, and at the end of the month we have monthly reflection, and last में हमारे पास कुछ extra pages है notes के लिए. So overall this planner is perfect for my 2023. I am very much satisfied with it. अभी मेरे mind में बहुत सारे ideas चल रहे हैं कि मैं अपने planner को कैसे use करूँगी, and of course मैं सब आपके साथ share करूँगी. So stay tuned for that. अभी कुछ ही दिनों में प्लानर सेटअप का वीडियो आने वाला है, एंड एवरी मंथ आई विल शेयर प्लान विद मी वीडियोस, सो डोंट मिस दैट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.